Hi everyone, good evening to everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to today's webinar on Unlocking the Mind, Exploring Psychiatry with Materia Medica on the Teach Beyond Boundaries webinar series with Homeopathy 360. And before starting the introduction of our esteemed speaker, on a personal note, today's session is even more special for me because Dr. Akshay sir is not just our speaker, he is also my senior from college. Having had the privilege to learn and grow in the same academic environment, I have always admired his dedication, depth of knowledge, and inspiration of to approach to practice. And today, our esteemed speaker for the session is Dr. Akshay Gautam sir. Now, let's know more about Dr. Akshay. Thank you, Mansi, for such a great introduction. Thank you, sir. Okay. So actually, I am also excited for this session, and the first reason is that because many of the student has messaged me कि sir because Instagram पे एक एक सबको मैसेज करना नहीं हो पाता है कि सर हाँ, कुछ एक प्लेटफॉर्म या कुछ एक ऐसा कीजिए. तो आई थिंक बीजन और होम्योपैथी 360 की तरफ से ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, तो मैं सोचता हूँ कि ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो पाएगा स्टूडेंट्स के लिए. बिल्कुल सर. ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन, जो भी आज यहाँ पे प्रेजेंट है. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार. आई थिंक इस वेबिनार के बाद आपको थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उसमें एनहेंसमेंट होगा, और जो अगर नहीं पता है तो उसमें एडिशन हो जाएगा. ठीक है. एंड मैं ट्राई करूंगा कि इसको ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में ना जाने का, और बीच में आपके जो भी क्वेश्चन हो, अगर बहुत ज़्यादा ट्रिकी वाले नहीं होंगे तो हम बीच में सॉल्व करेंगे, अदरवाइज हम एट द एंड ऑफ द सेशन ले लेंगे. ओके. Sure, sir. ओके. ओके, सो the topic is unlocking the mind and exploring psychiatry with Materia Medica. So before starting the topic, first let's learn what is psychiatry. So psychiatry is a Greek word which the psyche means your mind and iatry means the healing power. Okay. And psychiatry is a branch of medicine which is concerned with study, diagnosis, and treatment of the mental illness. And psychiatry deals with the disturbance of cognition, which means your thoughts and thinking, and the disturbance of your affect, which means your feelings and your emotions, how you reflect your feelings. Then next is disturbance of cognition. Cognition means your behavior and your action. Okay. So psychiatry deals in all these three aspects. And when the problem comes in either of these aspects, we try to tackle with them with our medicine. Especially as a homeopath, we should know this key where the psychiatry has the scope and where our materia medica has the scope. So before going into that materia medica aspect or homeopathy aspect, I just want to start with very basic thing of psychiatry, so that while reading the materia medica also some words usually comes again and again which we don't know the exact meaning, है ना? And while searching in the repertory also or in the material also, sometimes we become very misguided ki what to choose and what not to choose. Okay. So before that, we also have to see ki how to diagnose the case of a psychiatric patient. Okay. But I will not go into that much detail. I will keep it very simple because it is the first um, webinar on this topic. So, okay. With this, I will just start. So before starting, the first and foremost is the Sigmund Freud. I think आप सबने इनका नाम सुना है. And he was the Austrian neurologist and the founder of psychoanalysis. I think फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आपने इनका नाम सुना ही होगा. जो भी साइकेट्री पढ़ना चाहते हैं या जो भी थोड़ा भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो ही इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, सिगमंड फ्रॉइड.
And Sigmund Freud was mainly famous because he was always thinking, and there is similar to our Hahnemann, you can say, but Hahnemann was more of a, you can say, scientist also. So he was also experimenting. But in your Sigmund Freud, he was always believed that our childhood experiences and our unconscious mind always play a role in our growth, and the unconflicts, or sorry, resolve unresolved conflicts which happens in our childhood have a association with our adulthood life. So based on these principles, Sigmund Freud has given some of the concepts in psychology for which he was very famous. So some concept was the unconscious mind, free association, id, ego and superego, the dream analysis, the Oedipus complex and castration complex. Okay. So first, I think Sigmund Freud sir has given many theories and many models, but I will just discuss two or three which are very important and which you can relate with in this webinar. So first model was the topographic model of mind. It was the first model, one of the model which is given by Sigmund Freud, which is which divides our mind in three parts. First is the conscious mind, then pre-conscious mind, and then the unconscious mind. Okay. So he said we have these three parts in our mind: conscious, pre-conscious, and unconscious. The conscious part is that in which the contents are in our awareness. For example, right now you're attending this webinar and all the contents of this webinar and the time, place, and where you are sitting and watching this is all in your conscious right now. Okay. The pre-conscious, the content can be brought to our attention. It means, for example, if I'll ask you what happened in the COVID time, where were you at this time? Okay, you might be not able to remember exactly, but you will give a vague idea कि हाँ, at the time of the COVID, I was in this place, I was at this time at this place. Okay. But if I will tell you to concentrate on that topic, ki where were you or what were you doing? So maybe after concentration, like for 10-15 minutes, or maybe after one day, if I'll ask you again this question, then you may be able to tell all the details. Okay. That means the contents of the pre-conscious mind can be brought to the conscious mind by focusing our attention. Okay. Then next comes the unconscious mind. The unconscious mind, which in which the contents are kept away from the conscious awareness, means we are unaware of our unconscious mind that whatever happened previously or happening right now. Unconsciously, we don't know what is going on. Okay, and the pre-conscious mind act as a barrier between the conscious mind and your unconscious mind. Okay, means it will filter out the things which is necessary and which is not necessary. And here the if you can see here, my pointer is here. The dream analysis is written. Okay, so to access this unconscious mind, the segment the mind the dream work concept has given by Sigmund Freud, because he believed that the unconscious mind can be unlocked by the dream work, because dreams are the road to our unconscious mind. So that's why what he did, he he gave many dream analysis. For I will just discuss one. So in that, he has given one example, that a lady who is widowed right now, and she was having a recurrent dream of a snake in her dream. Okay, बार बार उसको ऐसा सपना आता है कि स्नेक्स बार बार उसे दिखाई देते हैं अपने सपने में. तो अब right now this is into the dreams, and we might not give that much importance to that. Non-homeopathically, I'm talking. Homeopathically, the dreams are very important, as we all know. So
what Sigmund Freud sir has did, he has started correlating things which is happening in your unconscious mind or which is happening in your dream. For example, the picture of again and again the snake is coming was correlated with the the male genitalia, because the female was unmarried and sorry, female was married, then she was widowed. Okay, so somewhere the sexual gratification, which was the normal physiology, normal phenomena, which should happen, but it was not happening because she got widowed. Okay, so that type of dream analysis helped to resolve the conflict which was going on in her mind and was keep occurring in her dreams. Okay, so that's how the Sigmund Freud has started the concept of dream work in me, the latent dreams which he converted into the actual meaning of that latent dream. Okay, some other example also you can take. For example, if in childhood you had a bad childhood and your mother and father has not treated you very well, है ना? So what happens there in the dreams of your adulthood and the dreams you are getting, that you are sitting along with the family, but you are able to see each and everyone, means your cousins, your friends, your teacher, you can recognize them, but the person sitting beside you, their face is not visible. Okay, their means everything visible, the action they are doing, they might be feeding you also, but their face is not visible. Okay, so the interpretation was done that the person who was harming them, maybe psychologically, in their childhood, for example, these were like your parents, mostly your parents, your mother or father, maybe grandparents also. Okay, so that's how the dream work, the concept of dream work has come, and Sigmund Freud has given much importance on this concept, and similarly we also give uh, much importance to our dreams. Dr. Kent also gives very much importance, and our repertoire is full of the symptoms of our dream. Okay, so that's how you can relate, see how much it is important. And the beauty of homeopathy is that the data we have right now is of 200-year old, है ना? And the things we are learning right now about the psychiatry is not that much old. So our homeopathy is much older, but the concept that they have given are still valid. We just have to reach it, understand it, and apply. Okay. So this was the first model, the unconscious mind, the conscious, preconscious mind. The next model was your id, ego, and your super ego. So this was your structural theory of mind. Okay. So in that, the mind was divided into three: id, ego, and superego, in which the id is your primitive aspect, means it is mainly of pleasure related drive. For example, the animals are only living on two, three things: your food, your sex, है ना, and the hunt. ठीक है, तो उस एनिमल को जब वो भूख लगेगा तो दे विल हंट, है ना, जब उसे मीट करना होगा दे विल लुक फॉर द पार्टनर. So id also the id in our mind also work in similar aspect. Okay, it is purely pleasure related drive and desire and hidden memory. So there is no barrier. Okay, means अगर मुझे कोई अभी पसंद आ रहा है तो I might go and grab her maybe in inappropriate way also. Okay, so this is a very primary instinctive, you can say, aspect. Okay, then comes your ego. ego is ईगो को एक्चुअली हम बहुत थोड़ा सा बुरा भी मानते हैं कि ईगो इंसान में नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, बट आई थिंक यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा, द ईगो इज नॉट ऑलवेज गुड और बैड. ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर माइंड, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी. तो ईगो क्या करता है, एक बैलेंस बना के रखता है. इट इज अ ब्रिज बिटवीन द इट्स डिजायर एंड सुपर ईगो. ओके, मीन्स इट क्रिएट्स अ रैशनल एस्पेक्ट एंड मोर प्रैक्टिकल वर्जन.
I will give you an example to understand it better. And then comes your super ego. The super ego is our moral compass. Okay, because our moral compass and the societal norms which are given to us, which we learn from our childhood, है ना, कि हमको कैसे उठना है, कैसे बात करना है, बड़ों की इज्जत करना है, ठीक है ना, टीचर्स का इज्जत करना है, क्या सही है और क्या गलत है. दिस इज आवर सुपर ईगो. ओके. नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल कि टुमारो इज योर एग्जाम, है ना. नाउ योर ईड इज सेइंग कि लेट्स गो हैव अ पार्टी, है ना. आई कैन नॉट रीड एनी मोर, लेट्स गो एंड हैव अ फन एंड पार्टी. सुपर ईगो इज सेइंग नो नो, योर एग्जाम इज टुमारो, हाउ कैन यू गो एंड डू पार्टी. अगर ऐसा करोगे तो फेल हो जाओगे. ओके. तो ईगो क्या करता है, इन दोनों के बीच में ये जो क्लैश जो होता है ना, ये जो इसको बैलेंस करने की कोशिश करता है. ठीक है. तो ईगो क्या बोलेगा कि ओके लेट्स डू वन थिंग, we'll do half day party and half day study. Okay. So that's how the ego resolves your internal anxiety. And now the anxiety comes when when either of them is more hyperactive, you can say. Means if it is more active, then also anxiety will come, because anxiety comes with the internal conflict. Okay. Here I want to give the example of arsenic, in which you always say ना कि हाँ, अगर एक कोई तस्वीर टंगा है तो जब तक अगर वो सीधा नहीं होगा, तब तक आर्सेनिक विल ट्राई कि ना ये सिमेट्री में होना चाहिए. ओके. तो कहीं ना कहीं उसका जो ईग उसको मतलब, मान लीजिए कि मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, ठीक है, एंड और मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे हैं, ठीक है, मैं एक ही रूम में हूँ, और मुझे वो तस्वीर उनके बगल में जो लगी है थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है. एंड मेरा सुपर ईगो गया कि भाई पहले उसका जो भाषण है, प्राइम मिनिस्टर है, वो हो जाने दो, ठीक है ना, ऐसे उठ के मत जाओ, नहीं तो बहुत बेइज्जती हो सकता है, उनके अभी डिसरेस्पेक्ट होगा. ठीक है. लेकिन एक बार बार ये कोशिश करेगा कि मैं बस उनके भाषण को छोड़ो, कौन खड़ा है, मैं उस फोटो को जाके बस सीधा कर दूं. ठीक है. So that type of anxiety comes in your arsenic also. Okay. It's one of the example, not the only one. It's just to help you understand. Okay. Now, your ego will develop certain mechanism to counteract that anxiety which is developing due to the struggle between your id and your super ego. Okay. So these are called your defense mechanism. Okay. नाउ आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया है, तो वी कैन कंटिन्यू, अदरवाइज आप थोड़ा कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, आई थिंक कोई डाउट नहीं है, सो विल कंटिन्यू. ओके. So these defense mechanism are for our protection, and our ego uh, um, helps us to defend by these mechanism. Okay, so these are few. Okay, there are more, but I have chosen only these 10 to what to say, yeah, for easy understanding. So first one is the projection. Okay, तो प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी पे चीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, एंड आई ऑलरेडी हैव अ वाइफ. ठीक है. बट उस वाइफ ने मेरी वाइफ ने मुझे पकड़ लिया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए. ओके. तो उसमें होता क्या है कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक. ओके. एंड आई विल प्रोजेक्ट ऑन हर दैट यू आर द वन हु इज डूइंग द अफेयर. I will project my problems and everything onto her. Okay. I will not take the responsibility. I will उल्टा उसी पे डाल दिया कि भाई तुम ही शायद ये चीट कर रहे हो, इसीलिए शायद तुम मेरी यहाँ पे जासूसी करने के लिए आए. ओके. नेक्स्ट कम द डिनायल. डिनायल इज ऑल्सो अ डिफेंस मैकेनिज्म. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो फाइट करते हैं हम सबके लिए, मान लीजिए उसकी वाइफ को एक दिन फोन आता है घर पे कि दैट यस दिस सोल्जर हैज पास्ड अवे एंड ही इज नो मोर. ओके.
So in that phase, for example, I am just cooking, है ना? I am the wife and I am cooking, and the phone came कि this happened. So to protect myself, to protect from this shocking news, from this trauma, mental trauma and the grief, what our ego will do? It will first deny that कि हाँ ऐसा कुछ response आया है. Okay, she will keep continue doing her means to keep cooking and will not stop. Okay, तो दैट इज कॉल्ड डिनायल. मतलब आपने बिल्कुल ही एक चीज को डिनाई कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे पति की मौत हो गई. ओके, दैट इज कॉल्ड डिनायल. बट ऐसा होगा कि बाद में उसके जो देयर रिलेटिव्स, देयर friends and everyone, when they will hold them, when they will console them, then she will cry. Okay, so that is denial. Means क्या हुआ कि जो एक पेनफुल स्टिमुलस जो आया था कि सडन जो हस्बैंड का डेथ हो गया, सोल्जर का डेथ हो गया, तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म ने, आवर ईगो ने क्या किया, उसको बचाया, और बचा के उसको एक डिनायल फेज में डाल दिया. ठीक है, ताकि फिर धीरे 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 अनवाइंड हो जाए. और क्या होता है जब यही अनवाइंडिंग नहीं होती है, देन पेशेंट बीमार पड़ जाता है. और यहाँ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है ना? जितना भी आप इसके अंदर देख सकते हो ना, जितना भी एलिमेंट फ्रॉम लव है, डिसअपॉइंटमेंट इन लव है ना? तो वहाँ पे हमारा ये जो मैकेनिज्म कहीं ना कहीं काम करता है, जो अनरिजॉल्व रह जाता है. ओके, और उस अनरिजॉल्व कराने में होम्योपैथी हेल्प करती है. देन नेक्स्ट कम द रिग्रेशन. रिग्रेशन एक, मैं पूरा डेफिनेशन वगैरह में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं करना चाहता इसे. रिग्रेशन को आप ऐसा मान सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं सब एग्जांपल अपने आप ही ले रहा हूँ ताकि किसी और को बुरा ना लगे. तो मान लीजिए कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मुझे मेरे बॉस ने बहुत ज्यादा डांटा है. ठीक है, he scolded me very badly. So what I will do when I will go home and my wife will ask me कि how was your day and everything. Okay, and when she will ask कि आज बेबी ने क्या खाया, आज बेबी के साथ मूड कैसा है, so I will reply in a very like a Shona Mona talk. I will do a very Shona Mona type of talk कि हाँ ठीक था, मैं भी अच्छा हूँ, तुम कैसे हो मेरी बाबू, इस टाइप की बातें. तो रिग्रेशन का कहने का मतलब ये होता है टू प्रोटेक्ट दिस फ्रॉम द द ट्रॉमा विच हैज हैपेंड टू हिम, सॉरी हैपेंड टू मी इन माय वर्क प्लेस. बट व्हेन आई गेट टू माय होम, like I am right now, for example, let's say I am 45, and when I went to the home and with my wife I became like 25. Okay, I regress to that सोना मोना स्टेज. ठीक है, ऑल्दो कि मेरी शादी को अभी 20 साल हो चुके हैं. ठीक है, बट दैट इज यू कॉल्ड रिग्रेशन. मीन्स कि वो एक आदमी है जो खूब गुस्सा भी करता है, सब कुछ है. अब उसको देख के नहीं बोल सकते कि वो ऐसा घर पे जाके बिहेव करेगा. ठीक है, बट दिस वेयर आवर डिफेंस मैकेनिज्म वर्क. ओके, इसको दूसरे तरह भी समझा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि दो बेबी हैं घर में, एक बड़ा है एक छोटा है. मान लीजिए एक है 8 साल का और एक है 4 साल का, 4 या 3 साल का. ठीक है, अब छोटे भाई बहन को ज्यादा प्यार मिलने की वजह से बड़े बच्चे में दोबारा से बेड वेटिंग स्टार्ट हो जाना. ठीक है, बेड वेटिंग क्या होता है, 7 साल तक ऑलमोस्ट खत्म हो जाना चाहिए फिजियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो. बट एक 9-10 साल में अगर दोबारा से बेड वेटिंग आ रहा है, जो एक साइन है कि पेशेंट इज रिग्रेसिंग टू इट्स चाइल्डर सेल्फ. ओके, आई थिंक इस एग्जांपल से शायद थोड़ा समझ में आया होगा. अगर ना आया तो आप मुझे चैट में या में बताइए, तो मैं कोई दूसरा एग्जांपल देने का ट्राई करूंगा. एंड मानसी, अगर कुछ इसमें आता है चैट में तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना. ओके. So, like we have one question for now. Like ओके, Nidhi is asking, will ego always do 50-50 as according to example? Can't ego make us think that कि आज पढ़ लेती हूँ पार्टी कल के लिए बाद में कर लेंगे? यस यस. ईगो का काम है, डिपेंड करता है कि ये कितना हावी है.
ओके। अगर ऐसा है कि एक्चुअली ये सारी चीज इस पे भी डिपेंड करता है ना कि हाउ इज योर अपब्रिंगिंग, किस इन्वायरमेंट में आप हैं, है ना। मान लीजिए कि पेरेंटल प्रेशर उतना नहीं है और कॉलेज भी थोड़ा सा ढीला ही है इस मामले में, ठीक है। लेकिन एक तरफ है कि पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि अगर ये पास नहीं हुआ तो बस इसको अगले दिन से रिक्शा टोटो दिलवा देना है और इसको काम करो। तो वहां पे क्या है ना कि ऑलरेडी एक दिया हुआ है घर ने, घर से एक डर की वजह से कह लो या कुछ भी, तो वो नहीं करेगा, ठीक है। उसका ईगो उसको चेक में रखेगा, ठीक है। सुपर ईगो भी अच्छे से काम करेगा, ईड को उतना नहीं आने देगा। लेकिन हाँ, कहीं पे अगर ऐसा टसल है कि दोनों ही स्ट्रांग हो रहे हैं, ईड एंड सुपर ईगो, तो देयर ईगो विल ट्राई टू बैलेंस इट आउट। इट माइट नॉट बी 50-50, ठीक है। हो सकता है वो ऐसा बोले कि सेम एग्जांपल जिसमें निधि पूछ रही है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मान लो कि सिर्फ 5 घंटे मैं या 3 घंटे एक मूवी देख के आ जाता हूँ, एक मूवी देखने के बाद पूरा दिन पढ़ाई करता हूँ। ओके, अगर मैं उस एग्जांपल के थ्रू ही उस एग्जांपल का अगर मैं रिवर्ट बैक करता हूँ क्वेश्चन, तो आई थिंक ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। आई होप निधि तुम्हें समझ आया होगा, अगर है तो प्लीज लेट मी नो, ओके। अगर नहीं भी आया है तो भी बताओ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट मोर। ओके, मूविंग ऑन। तो नेक्स्ट कम इज पैसिव एग्रेसिव। दिस इज ऑल्सो एन डिफेंस mechanism. And the passive aggressive, I think you all know, and you all have seen it in your classrooms. What happens? Your CR, your class representative or your monitor, उसको आपका उससे नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आपने उससे कोई नोट्स मांगे, मतलब CR आपको पसंद नहीं करता, और आपने क्लास के सामने नोट्स मांगे कि कैन यू गिव मी द नोट्स ऑफ प्रीवियस क्लास, या मेरा तुम अटेंडेंस लगा दोगे। तो द पर्सन who was actually angry, your CR is angry with you, so that time in front of the class he will say हाँ हाँ मैं लगा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, या मैं आपको जो नोट्स है मैं आपको घर जाके भेज दूंगा, ठीक है। बट इन रियलिटी होता क्या है कि वो घर जाके कोई नोट्स नहीं भेजता आपको, और न ही आपका कोई अटेंडेंस लगाता है। फिर नेक्स्ट डे आपको मंथ खत्म होने के बाद पता लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। तो दिस इज काइंड ऑफ पैसिव एग्रेसिवनेस, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो CR हु वाज एंग्री, उसको कहीं ना कहीं उसको उस एंगर को बाहर निकालना था। तो सबके सामने तो उसने बोल दिया कि हाँ मैं ये कर दूंगा, लेकिन बाद में उसने वो चीज को नहीं की, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके CRs है या जो मॉनिटर्स है उनको आप जाके बोलने लगो कि यार ये पैसिव एग्रेसिव नेचर बंद कर दे, ठीक है। क्या पता कोई और भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज योर इनहिबिशन। इनहिबिशन इज वेरी वेरी रिलेटेबल आई थिंक। तो इनहिबिशन को मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि ये हम सबके लिए एप्लीकेबल है। आई होप कि जितने देख रहे हैं वो सब होम्योपैथी हैं। तो लाइक आई एम राइट नाउ एन होम्योपैथ, आई हैव डन BHMS and MD, बट इन द स्टार्टिंग what I was aiming for was MBBS. Okay, but after not getting the MBBS, I have settled, or I have to say I have settled. That is correct at that time. So I've settled for BHMS and then did MD. Okay. So inhibition is the prime. This is the prime example of inhibition. Means आप जो मुझे नहीं मिल पाया, ठीक है ना, दैट टाइम MBBS मुझे नहीं मिला, और आई वॉज वेरी हर्ट एंड दिस एंड दैट, ईगो एंड ईड एंड एवरीथिंग वाज सेइंग कि एक और अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। सुपर ईगो बोले कि कितना और अटेम्प्ट होगा, घर भी देखना है, वगैरह वगैरह चीजें, ठीक है। तो ईगो ने कहा कि ठीक है, और सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है वो देख। ओके, so inhibition was the mechanism that was working that time when I chose BHM, and it is not applicable to BHMS. I am just giving this example because uh, I think we all are homeopaths here. So जो हम पाना चाहते थे, ये IAS IPS किसी के लिए भी हो सकता है। मैं पाना चाहता था, बनना चाहता था IAS, लेकिन मुझे IRF से फिर मुझे काम चलाना पड़ा, बट आई एम सेटिस्फाइड। ओके, कि ऐसा मुझे अब मुझे मत सोचना कि मैं अभी BHS में आ गया तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है।
I am just giving an example. Then next come the displacement. Displacement is also very interesting, and this is मतलब ये आपने डेली अपने घरों में देखा होगा, आई थिंक सो. तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि अगेन आई विल टेक माय एग्जांपल. आई एम in my office and my boss has again scolded me. I think you all are thinking कि मैं अपने काम में कितना बुरा हूँ कि बार बार मुझे ही स्कोल्ड कर रहे हैं. तो मुझे अगेन स्कोल्ड किया गया, बहुत डांटा गया, शायद नौकरी से निकालने की भी बात कर रहे हैं. तो मैंने क्या किया, मैं उस समय उसके सामने गुस्सा नहीं कर सकता था अपने बॉस के आगे. ठीक है. तो आई विल कम होम, आई विल शाउट ऑन माई वाइफ और मे बी आई विल हिट हर. ओके. Then the wife cannot show that kind of anger or retaliate to me. So she will do this on the child, on our children, and the children who cannot retaliate with the parents. What they will do? They will, maybe if a male child is there, they will just punch in the wall. Okay. So they have displaced their anger into some other, and some other. ठीक है ना. इसे इस एग्जांपल से आई थिंक थोड़ा सा समझ आया होगा. तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ओके. जो मेरा एक्चुअल मुझे करना चाहिए था, बॉस से बात करना चाहिए था, बॉस को समझाना चाहिए था, या जो गुस्सा था मुझे वही निकालना चाहिए था, लेकिन वो मैंने आके घर पे किया और मेरा ईगो सेटिस्फाइड हो गया. उसके बाद जो मेरी बीवी थी उसका ईगो उसके बच्चे पे करने के बाद हुआ, और वो वाला फिर बच्चे ने किसी नॉन लिविंग पे या फिर अपने उससे भी छोटा भाई बहन होगा तो उस पर निकाला होगा. ओके. और ये चीज बहुत बार देखने को मिलता है जब हम अ, अपने दादा या उनके मतलब कई फैमिलीज में देखने को मिलता है. और कभी कभार वो बोलते भी हैं पेरेंट्स कि जैसा मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया मैं वैसा ही कर रहा हूँ, जैसे मुझे मेरे मम्मी पापा ने पाला है मैं वैसे ही आ, आ, वही बिहेवियर मैं आपके साथ भी कर रहा हूँ. ओके. देन नेक्स्ट कम द अनडूइंग. अनडूइंग इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. आप सभी लोग अनडूइंग करते हैं लेकिन शायद आपको नहीं पता होता है. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम बार बार बोलते हैं, टच वुड. है ना. मीन्स कि मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, टच वुड, नजर ना लगे किसी. ठीक है. तो मीन्स क्या हुआ कि एक नेगेटिव थॉट मेरे अंदर आया कि कहीं ये चीज खराब ना हो जाए, तो उसको हटाने के लिए तो वी विल डू some kind of a ritual or some kind of action just to nullify that. Okay, like touch wood, कि मेरे साथ ऐसा ना हो या उसके साथ ऐसा ना हो. Okay, this is prime example of undo. Then comes the rationalization. Rationalization, I think we all have seen this in our OPDs. The prime example is when the patient comes to you and you will ask the patient to stop drinking alcohol, है ना, especially during the COVID time. So the patient will say कि sir, alcohol is like we sanitizer is for our hand and alcohol is for our stomach to kill the germs which are present in our stomach. Okay. तो रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी वो उल जलूल बात कर रहे हैं या जो भी जो वो अपना जो हैबिट है या जो वो काम कर रहे हैं उसको एक रैशनलाइज तरीके से बताएंगे कि उनके लिए वो कैसे सही है, उसका एक लॉजिकल रीजन आपको देंगे. so that is your rationalization. Then comes most important and most confusing 2 point plus point, suppression and repression. Okay. So I think I want to ask this question to our viewers. Can you tell me the meaning of suppression and repression, or is there any difference or both are same? मानसी मुझे बताना अगर कुछ चैट में आता है तो. Yes, so from the audience, can you please explain? So, ma'am, so Dr. Saraswati is saying, is Okay. regression means is regression means going back from current position? Yes, yes. Means I am like I am right now 30. Okay. And I am going back to my childhood or adolescence stage. ठीक है ना.
उस टाइप का, लाइक जो मेरा रिबेलियस नेचर था एडोलेसेंस फेज में, अगर मैं उस फेज में दोबारा जा रहा हूँ, बट जो मेरे एज को मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मेरे पेरेंट्स अगर मुझको लेके आते हैं और बोलेंगे कि ये इतना बड़ा हो गया है, नौकरी भी करता है, इसका शादी भी हो गया है, लेकिन अभी तक इसकी हरकतें जो हैं वो वैसे ही हैं जैसा ये अ, जब ये 16-17 साल का था तब था। ठीक है ना। और इससे हम बिल्कुल ही परेशान आ गए, कभी घर से भाग जाता है, कभी कोई चीज तोड़ देता है, हमारी बात नहीं सुनता, उल्टा जवाब देता है। ठीक है। तो आपको उस पेशेंट को ये समझना है कि ये मे बी द पेशेंट इज गोइंग टुवर्ड दिस रिग्रेशन, एंड वी हैव टू डील, मे बी देर इज सम अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विच वी हैव टू डील विद। ठीक है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? मानसी, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, मुझे sir. लगा That's all for. तुम भी शायद रिग्रेशन में चली गई। नहीं, sir. So that's all for now, sir. ओके ओके। तो नेक्स्ट कम द सप्रेशन एंड रिप्रेशन। आई थिंक किसी ने कुछ आंसर नहीं दिया है, तो आई आई आंसर दिस। तो suppression is what we do voluntarily. Okay, the basic difference is suppression what we do voluntarily. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ब्रेकअप हुआ या मेरा डाइवोर्स हो गया, एंड आई हैव टू मूव ऑन। ठीक है। so what I will do, I will purposefully try to forget the things which have happened in my past. Okay. Or I will burn all the photographs, maybe the gifts I will burn, maybe I will delete all the photos, है ना? These these are the things which I am doing voluntarily, ठीक है, to decrease the trauma, the sadness and everything. Okay, this is suppression voluntarily. But repression is opposite to that. Repression we are not doing voluntarily. It has happened to us, but we are not aware of that has happened to us. Okay, मीन्स क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक मेल पेशेंट ऑफ 40 year old, ठीक है, एंड हर मदर हैज अब्यूज्ड हिम in his childhood, let's say 10 years of age. Okay, so her own mother has abused him. Okay, but right now at the age of 40 he doesn't even remember, and he loves her mother too much. But even after loving her and this and that, he is always struggling to see why there is some conflict between with him and their his parents, with their mother in their dreams, है ना? The anxiety, okay, some kind of depression is going on. Okay, so these are the things happened at the childhood, but he is not aware of them right now. His own defense mechanism has repressed that emotion to prevent the harm that can happen to that child, and the child also forget about it. Okay, so that's how you can differentiate the suppression and repression, and the symptoms will tell you see how the patient are giving the symptoms of repression or suppression. For example, the dreams, है ना? ड्रीम्स को सेगमेंट पढ़ने क्या बोला था? द ड्रीम्स आर द रोड टू योर अनकॉन्शियस माइंड। एंड इसका एक प्राइम एग्जांपल अगर मैं मटीरिया मेडिका से समझाना चाहूँ, तो इसका एग्जांपल रहेगा मैक कार्ब। मैक कार्ब इज अ रेमेडी विच इज thoroughly explain how this repression works. Okay, and in the mac carb it has written that the train is leaving and I am not able to catch it. Symptoms are like this, that I am going to a picnic, but I am not able to, like they are going away from me, but I am not able to catch them. The bus is going away. Okay, means everyone is leaving me,
and I am alone in this world. The feeling of forsaken is too much, but he is not able to uh, comprehend कि why is it happening to me. But it only happens in my dream. My family is good, my mother and father take care of me, everything is good. But still, when I'm having these kind of dreams, I'm thinking कि I am alone, I am orphaned. Okay, and after that, maybe some kind of depression, and the mood will become very, very, very low. Okay. So I think Mac is a very good remedy that you can prescribe in the cases where you will find the repression is happening or happened in the past. There are many more defense mechanisms also, but I have just picked few for better understanding. Next comes uh, few basics of the psychiatry, few terminology which we see daily on our practice and our literature also. So I just thought कि हाँ इसको भी एक बार देख लेना चाहिए कि ताकि कोई confusion आगे ना आए. So first of all, what is delusion? Delusion is our false, fixed, and unshakable belief held with extraordinary conviction. Means चाहे आप कितना भी इनको फैक्ट्स दिखा लीजिए, प्रूफ दे दीजिए, दे विल नॉट बी एबल टू एग्री ऑन यू. ठीक है, दिस इज फॉल्स, फिक्स, अनशेकेबल बिलीफ, है ना, विच इज हेल्ड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कन्विक्शन. दिस इज डिल्यूजन. ठीक है, एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिल्यूजन. लाइक देयर इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, delusion of poverty, delusion of grandiosity, delusion of reference, delusion of dysmorphophobia, delusion of infestation जिसको हम एक्बॉम्ब सिंड्रोम भी बोलते हैं, एंड ओथेलो सिंड्रोम, delusion of infidelity. ओके, तो इसमें delusion of persecution का मतलब क्या होता है, कोई मुझे चैट में अगर बता पाए तो. What do you understand with delusion of persecution? Nancy, has anyone answered? Sir, Nidhi Raj is saying not being treated well, Okay, okay, okay. Partially and correct, but हाँ yes, बोलो. sir. And the Dr. Saraswati is saying false belief कि कोई मुखर्जी सता रहा है. मुखर्जी और मुझे हाँ, मुझे मुझे होगा. कि कोई ओके मुझे सता रहा है. ओके ओके. Yes, both are partially correct actually. So the delusion of persecution is that somebody is trying to kill me. Okay, somebody is out there and they are always trying to kill me. Kill me by poisoning, maybe शायद धक्का दे दें आपको, या फिर वो प्लान कर रहे हैं मुझे किसी तरह से हार्म पहुंचाने का. Okay, this is your delusion of persecution, which is seen in, I think, the one remedy which I can think is your anacardium. In anacardium, you will see the perfect picture of persecution, which we will discuss later also. Uh, I think one remedy is like other also have this persecution, but the delusion of persecution means the everyone, or means if I have suspicion that my neighbors are trying to kill me, then I will always think कि I will not take something if it is coming from their home. Like घर में प्रसाद आता है या कोई पूजा के लिए बुलाते हैं, तो I will not do. ओके, या फिर ऐसा कि जो भी लोग बाहर हैं वो मुझे कुछ ना कुछ हार्म करना चाहते हैं, या पुलिस मेरे पीछे पड़ी है. मान लो कि आप किसी रोड से जा रहे हैं और पुलिस वैन बस ऐसे ही जो चक्कर लगाते हैं, वो पुलिस वैन ऐसे गया है, बट आपको ये लग रहा है कि पुलिस वैन आपको ही पकड़ने आया है. ठीक है,
So this is your delusion of persecution. हाँ, चैट में काफी लोगों ने आंसर भी दिया है, बेलेडोना हाइवसानस रस्टॉफ, यस। Okay, the next is delusion of poverty. Very simple. कि they are not in reality, they are not poor, but they always have the sense कि हाँ कि मैं गरीब होता जा रहा हूँ, या फिर मैं गरीब हो चुका हूँ, या मेरे दिवाला निकल गया है। ठीक है ना। और देखोगे तो बहुत सारा सोना वगैरह, हाथ पूरे भरे हुए हैं अंगूठियों से, सब कुछ दिखेगा। ठीक है। बट स्टिल दे हैव डिलीजन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है। दैट्स हाउ यू टू अंडरस्टैंड कि एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, सब ज्वेलरी पहना है, सब कुछ है, लेकिन बोला है कि दिन रात डॉक्टर साहब मुझे तो बस यही डर लगा रहता है कि मैं, मेरा सब कुछ नुकसान हो जाएगा बिजनेस में, या मैं कल ही मेरा सारा बैंक वगैरह या जितना पैसा है वो लूट जाएगा। ओके। So this is your delusion of poverty, and you can see these in Materia Medica very easily. These persecution, I've given you one example, poverty, and in repertory also. In the mind section, if you put delusion, if you will search for the rubric delusion, there you will see these rubric. Okay. Then next come the delusion of grandiosity. Grandiosity means कि मैं ही भगवान हूँ। ठीक है ना। अपने आप को सुपर ह्यूमन या अपने आप को बहुत अथॉरिटेटिव फिगर में रखते हुए मुझे ये लगता है कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ। ठीक है। इसके प्राइम एग्जांपल का कोई मुझे लगता है सबको ही पता होंगे एग्जांपल। इसका मैं एक मूवी रेफरेंस भी देना चाहूंगा। हम्म। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। आई थिंक ये मुझे सबसे एप्ट लगा इस डिलीजन के लिए, तो डिलीजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के लिए आई थिंक ये आप याद रख सकते हैं कि ये फीलिंग होना। ठीक है। this this shows your that you are mentally ill and you have to take treatment. Okay. The next comes is delusion of preference. ठीक है। delusion of preference का मतलब क्या होता है कि हमेशा ये सोचना, मान लो कि मैं किसी एक स्ट्रीट से, आई एम गोइंग फ्रॉम अ स्ट्रीट एंड 2-3 पीपल्स आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड दे आर पासिंग बाय। ठीक है। बट आई विल एंड दे आर टॉकिंग टू देमसेल्फ, गिगलिंग टू देमसेल्फ, they are not talking about me. But in delusion of preference, I will think कि they are talking about, वो जो हंस रहे हैं एक दूसरे को बात करके, वो मुझे देख के ही हंस रहे हैं। ठीक है। तो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में ऐसा पेशेंट को पक्का पक्का बिलीफ होता है, और उसको आप चाहे कितना भी, आपका फ्रेंड अगर ऐसा बोल रहा है और आप उसको इतना ही बोलो नहीं नहीं वो कोई और लोग हैं, वो लोग को तो हमारा भाषा भी नहीं पता है, नहीं नहीं, ही विल से कि नो 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 दे आर टॉकिंग अबाउट मी। ठीक है। तो दिस इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। देन कम्स द डिल्यूजन ऑफ डिसमॉर्फोफोबिया। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डिसमॉर्फोफोबिया में क्या लगता है कि जैसे आई एम सिटिंग है एंड आई विल थिंक कि या तो मेरी नाक बहुत बड़ी है, या मेरा एक कान बहुत छोटा है, या कान बहुत बड़ा है। जैसे आपने आमिर खान के देखा होगा ना, कान के थोड़ा बाहर निकले हुए हैं। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट को हमेशा ये लगता रहता है कि मेरा कोई ना कोई बॉडी का पार्ट बड़ा है या छोटा है, प्रोपोर्शन में नहीं। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द डिल्यूजन ऑफ डिसमॉर्फोफोबिया। देन कम्स द डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन, जिसको हम एग बॉक्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। इन्फेस्टेशन में क्या होता है, जैसे आप बोलते हैं ना कि सर मेरी स्किन में यहाँ पे चेक कीजिए, हाथ में ऐसा लग रहा है कि कीड़े चल रहे हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ इन्फेस्टेशन। आपने सब कुछ चेक किया, सब कुछ देखा, डरमेट से लेके सबको दिखा लिया, सबने बताया कि नहीं द स्किन इज परफेक्टली फाइन, बट स्टिल दे बिलीव दैट कि नो नो आई हैव बीन इन्फेस्टेड एंड देयर इज worms, there is spiders, and they are crawling inside my skin. Okay, so this is delusion of infestation, जिसको हम egg box syndrome भी बोलते हैं। नेक्स्ट कम द ओथेलो सिंड्रोम। ओथेलो सिंड्रोम को डिलीजन ऑफ इनफिडेलिटी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आई हैव द बिलीव दैट माय वाइफ, और if I am the wife, that I believe that my husband is doing an extramarital affair on me. Okay, I have the firm belief that he is doing it.
नो मैटर आप जितना भी कैमरा लगा लीजिए, आप फोन चेक करवा दीजिए, सारा प्रूफ दे दीजिए, बट दे विल नॉट बिलीव। ओके, तो दिस इज ओथेलो सिंड्रोम या फिर डिल्यूजन ऑफ इनफेरिटी। नेक्स्ट कम द इल्यूजन्स। नाउ इल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशन में कभी कभी मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो इल्यूजन्स मीन्स द फॉल्स परसेप्शन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट और स्टिमुलस। मीन्स कि आपने अंधेरे में थोड़ा सा देखा कि वहां पे शायद कुछ कपड़ा टंगा था और वो हिल रहा था, है ना, और मुझे लेकिन बार बार लग रहा है कि वहां पे कोई ना कोई भूत है। या फिर कोई दूर पे एक रस्सी पड़ी हुई है जो मुझे लेकिन बार बार ऐसा लग रहा है कि वो एक स्नेक है। मीन्स द ऑब्जेक्ट इज देयर, दिस इज द रियलिटी। The object is there, the rope is there, but I am not perceiving it as a rope। पर मुझे ये illusion हो रहा है कि that is a snake। ठीक है, the false perception of real object is illusion। Okay, but in hallucination there is also false perception but without any real object or without any real stimulus। Means कि एक्चुअल में वहां पे कोई भी रोप नहीं है, बट स्टिल आई एम सीइंग कि हाँ वहां पे कोई ना कोई स्नेक है। या फिर वहां पे कोई भी नहीं खड़ा है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि नो नो somebody is there and he is watching me and he is trying to kill me। Okay, so these type of things you will experience is hallucination। Okay, so hallucination is different and illusions are different। In hallucination there is no real object, there is no stimulus, without stimulus they are percepting these। Okay, and when we are talking about the perception, we have the five senses by which we perceive it। These are your tongue, your nose, your eyes, and your skin also, and your ears, है ना। तो आप सुनते हैं, सूंघते हैं, सुनते भी हैं, देखते हैं और फील भी करते हैं। तो ये जो आपकी पांच सेंसेस हैं, उन्हीं से ही आपका परसेप्शन बनता है। तो इसीलिए जब टाइप ऑफ हेलुसिनेशन में देखेंगे, there are auditory hallucination, there are visual hallucination, there are tactile hallucination, and there are other hallucination also। I will just explain। So first, auditory hallucination। मैंने क्या बोला कि false perception without any real object and stimulus। So there is nobody is like talking behind my ear or like थोड़ा दूर से भी कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, but I will have the hallucination that they are talking about me or somebody is standing beside me and he is talking to me। ठीक है, एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री सब कैटेगरीज भी है इसके अंदर, कि फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन और थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें मैं आपको बता देता हूँ सिंपल टर्म में। फर्स्ट पर्सन में ये होता है कि अ पर्सन इज सॉरी imaginary person is in front of me and he is talking to me, like one to one I am talking to him and he is talking to me। this is first person। सेकंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन क्या होगा कि इसके अंदर टू वॉइसेस आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड आई एम हेयरिंग इट। ठीक है, दे आर नॉट टॉकिंग टू यू। ओके, दे आर टॉकिंग टू देमसेल्फ। थर्ड में भी ऐसा ही है, बट थर्ड में आप बाईपास की तरह आप देख रहे हैं, इसकी तरह कि हाँ दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, तो दीज आर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दिस टाइप ऑफ ऑडिटरी हेलुसिनेशन। रिमेंबर देयर इज नो रियल stimulus or no real object is there, they are all imagining this। Then comes the visual hallucination। means I am able to see exactly कि हाँ this person, for example I am talking with गांधी जी जो बहुत साल पहले मर चुके हैं। ठीक है, या सुभाष चंद्र बोस जो बहुत टाइम पहले जिनका निधन हो चुका है, बट फॉर मी ही इज लाइक अ लाइव एग्जाम्पल। मैं उससे आमने सामने बात कर सकता हूँ। दिस इज विजुअल हेलुसिनेशन। मीन्स इसमें क्या हो रहा है, विजुअली भी मुझे दिख रहा है और ऑडिटरी भी हो रहा है, दोनों चीजें एक साथ चल रही है। विजुअल हेलुसिनेशन एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन दोनों एक साथ हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि एक पर्सन में दो या तीन हेलुसिनेशन भी साथ में हो सकते हैं।
अच्छा, तीसरा पर्सन जो खड़ा होकर देख रहा है, ही कैन से कि भाई ये क्या पागल हो गया है या क्या हो गया है, क्योंकि वो जिससे बात कर रहा है उसको वो लोग नहीं देख सकते। बट फॉर हिम, फॉर द पर्सन हु इज सफरिंग, ही फॉर हिम दे आर वेरी रियल। जिसका एक प्राइम एग्जांपल मैं देना चाहूँ, आप सभी ने एक मूवी देखी है, मुन्ना भाई एमबीबीएस, है ना? तो सर्किट जो है, ही वॉज कंफ्यूज इन द मूवी, उसको गांधी जी नहीं दिखाई दे रहे, उसको बापू नहीं दिखाई दे रहे, बट संजय दत्त को बापू क्लियरली दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, वो उनसे बात भी करता है, उनको छूता भी है। ठीक है? तो दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ हेलुसिनेशन, इन विच संजय दत्त वाज एबल, मतलब सॉरी नॉट एबल, ही वाज एक्सपीरियंसिंग द ऑडिटरी हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन एंड टेक्टाइल हेलुसिनेशन ऑल्सो। ओके? तो अगर इस चीज को इससे रिमेम्बर करना है तो आप ये एक एग्जांपल ले सकते हैं। एंड टेक्टाइल मीन्स ऑब्वियसली वी कैन टच, वी कैन फील। ठीक है? नेक्स्ट इज ऑटोस्कोपी। ऑटोस्कोपी इज वेरी fascinating actually. इन ऑटोस्कोपी व्हाट हैपेंस इज, जैसे कि हम क्या करते हैं, आपने कई मूवीज में भी ऐसा देखा होगा कि आप मिरर के सामने अपने आप को देखते हैं, तो आप अ, जैसा हम फेस को हिला रहे हैं, जैसा मूवमेंट हमारे फेस का वैसा ही होता है ना? बट इन ऑटोस्कोपी क्या होता है, विदाउट एनी मिरर और एनीथिंग, आई एम सीइंग माई सेल्फ टॉकिंग टू मी, फ्रंट एंड बैक। ठीक है ना? टू एंड फ्रो बातचीत चल रहा है। या फिर आई एम जस्ट सिटिंग हेयर एंड माई बॉडी इज मूविंग अराउंड एंड सीइंग मी कि आई एम सिटिंग हेयर। दिस इज योर ऑटोस्कोपी। Okay, this is also a type of hallucination. So with this we have completed all the technical terms. मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके इसको नॉन टेक्निकल रखा जाए, बट स्टिल कुछ चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी था। नाउ कम्स द होम्योपैथिक पार्ट and the beauty of homeopathy and the mastery of our uh, master Hahnemann. So एक फैसिनेटिंग चीज जो मुझे पता लगी बिटवीन डूइंग माय एमडी एंड लर्निंग अबाउट साइकेट्री, कि पहले जो मेथड्स यूज होते थे, दे वर वेरी क्रूल, स्पेशली अगेंस्ट द ill person. For example, if that ill person wants to do suicide, or not wants to do, that ill person did attempted the suicide and he was saved, but the police or the judge and everyone can still held him in contempt that you have attempted the suicide, now you will go to jail. ठीक है? दिस टाइप ऑफ लॉ वर देयर। मीन्स एक तो आपने सुसाइड किया और आप सुसाइड करने के लिए गए, आप बच भी गए, और बचने के बाद आप बचे तो क्या बचे, पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस ने आपको जेल में डाल दिया, तो मतलब यहाँ भी फंस गए, यहाँ भी फंस गए। बट ऐसा अब नहीं है। अभी के जो लॉज हैं, जो मैंने रिसेंटली में जो पढ़े हैं, जिसको अब आईपीसी से, भारतीय न्याय सहायता बोला गया है, उसके अंदर अगर कोई इल पर्सन, द मेंटली इल पर्सन, इफ ही डिड सुसाइड और एनीथिंग, इफ ही अटेम्प्टेड दिस, तो उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं होगा। ओके? दिस इज द लेटेस्ट वन, द लेटेस्ट रूल। सो पॉइंट मेरा इसलिए ये बताने का था कि क्रूअल्टी, जो ऑलरेडी पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, है ना, ही इज ऑलरेडी सफरिंग, बट द I will not say the allopathic one, but the practices that were done, because allopathy is also advanced and changed very strict rule against this, कि they also believe that कि कोई ऐसा harm या physical torture नहीं होना चाहिए। ठीक है? But they believe this now, but our Hahnemann believed this 200 years back. That is very fascinating to me, and he has given all the proofs in the organon of medicine. And I think you all can agree how beautifully he has given not only the medicinal aspect, he has also given the management aspect also. है ना? I think you all remember the auxiliary regime which he has given in while treating the patient of mentally ill patient. है ना?
This one, 228, in which, if you can see in the fourth line, auxiliary mental regime. So he clearly mentioned कि how to deal with the patient, जो मुझे लगता है कि इस सेमिनार से या फिर आप लेकर जाएं कि आपके खुद के लॉज, आपके खुद की पैथी क्या ऑफर कर सकती है इन द वर्ल्ड ऑफ मॉडर्न मेडिसिन. यू कैन confidently say कि yes, we are following from 200 years the set rules by Master Hahnemann, which is given by his own experience, okay, and which are very absolute, which are very firm and correct also. See, he has given clearly that to furious mania, we must oppose calm interpretive and cool, firm resolution. To doleful quarrelsome lamentation, a mute display of commiseration. To senseless chattering, a silence not wholly inattentive. To disgusting and abominable conduct, to the conversation of similar character, a total inattention, and we must merely endeavor to prevent the destruction and injury of surrounding objects without reproaching the patient for his act, and everything must be arranged in such a way that the necessity of any corporeal punishment and torture, whatever may be avoided. है ना? So Hahnemann believed, and he has also treated one very famous case. I think if anyone in the chat can tell me that case, the first few of the cases in mental asylum he has treated, and in that case he only given this auxiliary mental regime. He has not given any medicine, and he has successfully treated that patient. And mind you that the auxiliary mental regime was totally opposite to the practices that were happening at that time. Means the torture was there, the electrocution was there. Okay, but right now this electrocution and the torture method are also banned in the cases of mentally ill patient in allopathic practice also. But they have done it now. Hahnemann did it 200 years back. Okay. I think in chat, if somebody tell me that case or the name of the case, that would be very happy moment for me. अगर ऐसा हो जाए, अगर कोई ऑर्गेनॉन से है तो आई थिंक वो बिल्कुल आंसर कर पाएंगे. So, any guesses from the audience? Let's do participate. So, please proceed. Okay, ठीक है. क्रॉकनबर्ग इज द नेम. ओके, इफ अगर नहीं भी मिला है तो आप जाके इस केस को पढ़ सकते हैं. It was one of the few cases which was treated by Master Hahnemann with only auxiliary mental regime. No medicine. He has not given any medicine. बस उन्होंने क्या किया था, जितना भी हार्मफुल चीजें हैं पेशेंट की रीच से दूर रखा ताकि वो खुद को इंजर ना कर पाए और दूसरों को इंजर ना करे. ठीक है, उसको किसी भी तरीके के हार्श ट्रीटमेंट, हार्श किसी भी पनिशमेंट, इन सब चीजों को बंद कर दिया था. ठीक है. नेक्स्ट ऑल्सो मास्टर हैनीमैन हैज गिवन इन द अफोरिज्म 229 that on the other hand contradiction, eager explanation, root corrections, and invectives, as also weak, timorous yielding, are quite out of place with such patients. They are equally pernicious modes of treating mental and emotional malady. ठीक है? But such patients, most of all, exasperated and their mental aggravation and complaint aggravated by contumely, fraud, deception, that they can depend. The physician and keeper must always pretend to believe them
that they possess of reasoning. Okay, कहने का मतलब ये है, जब भी आपके सामने कोई मेंटली इल पेशेंट बैठा है या जब भी वो कोई अपनी बात को खुल के बता रहा है, तो उसमें उसकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, रूड बिहेव नहीं करना है। ठीक है, और जो पेशेंट बोल रहा है उसको एज इट इज मानना है। हाँ, आपको उस चीज को कंफर्म करना है या कुछ और आपको उसमें ऐड करना है, तो वो आप उसके पेशेंट्स के पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, उनसे आप पूछ के उसमें ऐड कर सकते हैं। बट अब उसको पेशेंट को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, उसको रूड बिहेव उसके साथ ना करें, बहुत ज्यादा ईगर भी नहीं दिखना है कि पेशेंट के साथ आप चैटिंग करे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ज्यादा अगर पेशेंट आपसे फालतू की बातें कर रहा है, सेंसलेस चैटिंग कर रहा है, तो उन्होंने, हनीमैन ने क्या बोला, आई साइलेंस, साइलेंस हमको एक डिस्प्ले करना है, म्यूट डिस्प्ले करना है। ठीक है, डांटना नहीं है। ओके, एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, what Hahnemann had did, he almost all the so-called mental and emotional disease are nothing more than corporeal disease. See how beautifully he has explained कि mental disease और emotional disease ऐसा कुछ भी नहीं है. They are just the corporeal disease in which the symptom of derangement of mind and disposition peculiar to each of them is increased, while the corporeal symptoms decline, till it at length attain the most strikable one-sidedness, almost as though it were a local disease in the invisible subtle organ of the mind or disposition. Means सो कॉल्ड मेंटल और इमोशनल डिजीज को आपको जस्ट एज अ कॉर्पोरियल डिजीज जो आप ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट करना है, आपको कोई सेग्रीगेशन इसमें नहीं लाना है, आपके ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बस ऑक्सिलरी जो रेजीम है आप उसको फॉलो करें, डाइट को फॉलो करें। ठीक है, और अपना जो होम्योपैथिक मेडिसिन है सिम्टम टोटलिटी के बेस पे आपको देना है। ठीक है, और इसके बारे में और पढ़ना हो तो आप अफोरिज्म 210 टू 230 आराम से आप पढ़ सकते हैं, उसके अंदर ईच ऑफ aspect of mental disease and how to tackle those mental disease has given. Okay, I will not go into that detail, but these were some important points. इसमें हैनीमैन ने मैं फिर भी बता देता हूँ, दो तरीके बताए हैं कि एक तो है कि अगर कोई बहुत एक्यूट फेज आया है, ठीक है, which is given in the examples are given in aphorism 221. If however insanity or mania which is caused by fright, vexation, the abuse of spirituous liquor, etc., have suddenly broken out as an acute disease in the patient's ordinary calm state, although it almost always arises from internal sora. So he is saying that these type of condition which is occurring in a normal ordinary patient of a calm state patient, ठीक है, this is happening due to the latent sora. ठीक है, latent or internal sora which is suddenly broken out as an acute disease because of the ailments which we learned in our material Medica. Ailment from fright, ailment from vexation, है ना, or maybe due to the spiritual sleep. Okay, so in that type of cases we have to first give the medicines, the normal medicines, ठीक है, not the antisodic medicine, the medicines like aconite, the belladonna, promonium, hyoscyamus, mercury, and etc. in highly potentized minute homeopathic doses. ठीक है, so that the latent sora, the exploded sora will become subside. ठीक है ना, then after that उसका recurrence ना हो, then you have to give your antisodic medicine. ठीक है, ऐसे केस में अगर आपने पहले एंटीसोडिक दिया तो फिर काम नहीं करेगा, हो सकता है कि एग्रीवेशन भी हो जाए। ठीक है, तो यू हैव टू लुक फॉर द कॉज कि किस वजह से हुआ है। ठीक है, प्राइट है, वेक्सेशन है, स्पिरिचुअस लिकर है, एंड अगर वो पेशेंट ऑलरेडी कभी भी मेंटली इल पेशेंट नहीं था और अचानक से ऐसा हुआ है, देन यू हैव टू फर्स्ट डील विद योर एक्यूट मेडिसिन, है ना, एंड इन हाईली पोटेंटाइज एंड माइन्यूट डोजेस। ओके, देन रिकरेंस ना हो उसके लिए आपको एंटीसोडिक मेडिसिन देनी। ओके,
Okay, now we comes to the last part. This is our मटीरिया मेडिका. इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा. मैं चाहूंगा कि अगर ऑडियंस इसमें थोड़ा सा पार्ट ले पाए. तो फर्स्ट एंड foremost medicine I think which covers most of the things which I have taught, which I tried to taught, is anacardium. So in this you will find, see, sudden loss of memory. Everything seems to be in a dream. Patient is greatly troubled about his forgetfulness. He is always confused, unfit for business, disposed to be malicious, seems bent on wickedness, irresistible desire to swear and curse, lack of confidence, feels as if he had two wills, one commanding him to do and the other forbid. This is the example of what the hallucination which we have talked about. ठीक है? The auditory hallucination and the visual hallucination. ठीक है? Both things means एक पे ऐसा लगता है कि एंजल है और एक शोल्डर पे लगता है कि डेविल है. One is telling him when he's compelling him and continuously telling him in his ear ki do this, kill that person which is in front of you, kill your friend. Other the angel one is saying no, don't do this. He is your friend, he is your dear friend, he has helped you so many times. Okay, like this. Then next is when walking is anxious as if someone was pursuing him, suspect everything around him. ठीक है, this is the which we learned in the delusion of persecution. ठीक है, अगर आप अभी कोई बुक लेके बैठे हैं, मान लीजिए एलन स्किनो, तो आप यहाँ पे इस इतने पोर्शन को आप लिख सकते हैं कि दिस इज सिग्निफाइंग दैट दिस इज डिल्यूजन ऑफ persecution, and this part where he is saying that he has two will and one is commanding, one is forbidding, this is your hallucinations. Primarily the auditory and your visual hallucination. ठीक है, that's how you will also able to analyze the allopathic prescription also. If a mentally ill patient is coming with you prescription of allopathic prescription and he has written these kind of words, then you have to analyze those words, what they are saying, है ना? And then you have to correlate with your material medicine. So in the same medicine you are getting the delusion also, you are getting the hallucination also. Next is the hypochondriac with hemorrhoid and constipation, strange temper, laugh at serious matter, and is serious over laughable matter. है ना? Very strange. This we say the mania. Okay. Sometimes they are laughing, sometimes they are crying. And she thinks herself a demon, curses, swears. And all these things are true, but the peculiar thing in which you will prescribe the anacardium is like, first point is a sensation of hoop or a sensation of band around whole body. Physical symptom I am telling. ठीक है, the patient will say from head to toe, कहीं ना कहीं पे a sensation of loop, a sensation of band is there. ठीक है, maybe in anus, maybe in your waist, maybe in leg, somewhere, maybe in your head. Second symptom characteristic, the eating will relieve most of the symptom. ठीक है, and the third symptom is forgetfulness, very prime remedy for forgetfulness. Okay, so your anacardium is filled with hallucination, delusions, and the characteristic symptom will be the your hunger, means after eating ambulation, forgetfulness, and the sensation of hoop or a sensation of death. Okay? This is peculiar to your anacardium. Now the delusion of persecution or the suspiciousness, this type of things are also present in Rustox. I think one of the viewer has also answered Rustox. Mm, Nidhi has answered the Rustox. Yes, Rustox patient is also very suspicious and means they will also suspect कि कोई ना कोई उनको मारना चाहता है या उनके खाने में कोई पॉइजन मिला दी. ठीक है, तो these things are both present in anacardium and Rustox.
Next comes lechesis. आई थिंक लेकेसिस आते ही सबको एक चीज तो याद आ ही जाती है, रिलीजियस मेनिया. And it is very wonderful remedy which is uh, like a great stalwart has said कि अगर सिर्फ उन्होंने एक रेमेडी अगर जो प्रूव की है वो है लेकेसिस, और अगर वो बाकी उन्होंने एक्चुअली 70 to 80 रेमेडीज प्रूव की हैं, बट द वर्ल्ड ओ हिम अ ग्रेट contribution, great we are greatly indebted by him that he has proved lechesis. And what he said, that the lechesis had great loquacity, sadness in the morning, no desire to mix with the world, restless, uneasy, does not wish to attend to business, want to be off somewhere all the time, jealous, mental labor best performed at night, euthanasia, suspicious, nightly delusion of fire. See, the delusion of fire is given in lechesis. And one thing is mm, pyromania. Pyromania is also, which means you have irresistible desire to burn things. ठीक है ना? Or you want to set things on fire. Okay. The delusion of fire and religious insanity, derangement of time and senses. So one basic thing I can say, the difference between lechesis and anacardium is that in anacardium, the more the devil kind of thing, devil and your angel kind of thing is there, means one is saying ki do this, one is saying don't do this. Okay. But in lechesis, more of religious kind of mania or insanity is there. Means lechesis patient will think that I am in control of some supernatural power, कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा, कोई और मुझसे ये करा रहा है. जिसको अगर साइकेट्री की भाषा में बोला जाए, जिसको बोलते हैं थॉट एलियनेशन और थॉट विड्रॉल. ठीक है. आप सिर्फ टर्म लिख लीजिए, अगर आपको बाद में इसको देखना होगा तो आप पढ़ सकते हैं बुक से. तो लैक्टिसिस के पेशेंट में आपको थॉट एलियनेशन एंड थॉट विड्रॉल जैसे जो टर्म्स हैं वो हेल्प करेंगे आपको एक मॉडर्न मेडिसिन के टर्म में अगर समझना है तो. मीन्स द पेशेंट थिंक कि माई थॉट्स आर नॉट माई ओन, somebody else is inserting it in me and I am just following. पेशेंट को ये बिलीव होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे कोई करवा रहा है. इसमें आप ये बोल सकते हैं कि शायद पेशेंट ऐसा बोले कि मैं थोड़ी ये काम करता हूँ, भगवान मुझे जो आदेश देते हैं मैं वो काम करता हूँ. ठीक है. तो दिस काइंड ऑफ रिलीजियस इंसैनिटी विल बी सीन इन योर लेक्सिस पेशेंट. नेक्स्ट कम्स कालीब्रोमेटम. In this, I think one symptom is very important, which I have found in your boric materia medica. See the second line. Imagines he is singled out as an object of divine wrath, which means he constantly thinks कि जिंदगी में जो भी मेरे साथ आज तक बुरा हुआ है, भगवान सिर्फ मेरे साथ ही बुरा करता है. भगवान मेरे साथ कुछ खेल खेल रहा है ऐसा कि मैं चाहे जो भी अच्छा करने जाऊं मेरे साथ बुरा हो जाता है ना. ही ऑलवेज थिंक्स कि आई एम एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिवाइन रैथ. ठीक है. और क्या बोल रहा है? प्रोफाउंड मेलनकोलिक डिल्यूजन, फीलिंग ऑफ मोरल डेफिशिएंसी. नाउ द मोरल डेफिशिएंसी मींस द सुपर ईगो. ठीक है. रिलीजियस डिप्रेशन, अगेन द रिलीजियस डिप्रेशन, बट नॉट लाइक योर लेकेसिस. इन लेकेसिस पेशेंट वाज सेइंग कि कोई और मुझसे करवा रहा है. ठीक है ना. बट कैलिब्रोम में द पेशेंट थिंक्स कि everybody is conspiring against me and the God himself is just playing with me, toying with me. मतलब जो भी मुसीबत हो सकता है मेरी जिंदगी में ही डाल रहा है. मेरी जॉब चली गई, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरी वाइफ छोड़ के चली गई, मेरा प्रॉपर्टी पूरा चला गया. तो ही इज ऑलवेज थिंकिंग कि गॉड इज डूइंग समथिंग अनफेयर टू मी. ठीक है. देर इज दिस इज रिलीजियस, मोर रिलीजियस इंसैनिटी से ज्यादा रिलीजियस डिप्रेशन इज मेंशन्ड इन कालीब्रो. ठीक है.
So that is the difference between your lachesis and calibo. The next comes the trio of mania and delirium. You all know the belladonna, stramonium, and your hyoscyamus. Okay. So, as you all know, belladonna किस टाइप का पेशेंट है और the symptoms, how the symptoms revolve around belladonna. I will just read only few symptoms which are very important and which I found in Boric Materia Medica. See, patient lives in a world of his own, engrossed by specters and visions and oblivious to surrounding reality. See this symptom, how beautifully he has written, and I'm just going back to this to make you understand. I've said na, auditory hallucination means the first person, second person, third person. ठीक है ना? पेशेंट वाज सेइंग कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, सॉरी नॉट सेइंग, हियरिंग दैट दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? विजुअल विजुअल में ही कैन सी आल्सो देम एंड द एग्जैक्ट थिंग इज रिटन इन बेलोडोना. पेशेंट लिव्स इन हिज ओन वर्ल्ड engrossed by specters. ही इज seeing कि लोग मुझे देख रहे हैं पर रियलिटी में वहां पे कोई भी नहीं है. ओके, विजन्स एंड oblivious सराउंडिंग रियलिटी. ठीक है, the example of Munna Bhai MBBS you have to remember. While the retina is insensible to actual object. Again they are saying actual object नहीं है. ठीक है, a host of visual hallucinations through about him and come to him from within. Okay, he is acutely alive and crazed by a flood of subjective visual impressions and fantastic illusions. See, all the things which we have read are coming in. Hallucination, sees monster, hideous faces, delirium, frightful images, furious, rage, bite, strike, desire to escape, loss of consciousness, disinclined to talk, perversity with tears, and acuteness of all senses. Okay, तो कहीं ना कहीं हम बेलाडोना को थोड़ा सा एग्रेसिव रेमेडी समझ के या जो मेनिया का जो हम बात करते हैं उसमें कभी ना कभी हम ये सिम्टम्स को मिस कर देते हैं. दैट्स व्हाई आई पर्पसली पुट दो सिम्टम हेयर टू एक्सप्लेन कि इनका जो रियल मीनिंग है वो क्या है. ठीक है, जिसको अगर कोई बोलता है कि आप किस साइकेट्री की फील्ड में आप क्या कर सकते हैं, तो वी हैव ऑल द सिम्टम्स है. वी हैव ऑल द सिम्टम ऑन विच यू कैन मेक द डायग्नोसिस एंड प्रिस्क्राइब आल्सो. ओके, next come, he imagines that he sees ghosts, hideous faces, various insects, and black animals, dogs and wolves. Now this is characteristic for belladonna. Okay, the black animals and dog and wolves. This is very characteristic, and fear of imaginary things. Violent delirium disposed to bite means very violent. He will tear your he will tear his own clothes or someone in front of them. He will bite. He will strike. He will spit. Okay, break into fit of laughter, wants to bite and strike the attendee. ठीक है, so these type of violent mania, you can say violent kind of delirium is present in belladonna. Okay, then comes the stramonium, जिसको एक लाइन में अगर जो हम बोलते हैं तो क्या बोलते थे इसको? हायोसामस के लेसिवियस मेनिया, रिलीजियस मेनिया, और बेलाडोना के लिए वायलेंट डिलीरियम जो हम बोलते हैं. तो इन स्ट्रेमोनियम में क्या क्या दिया हुआ है? सी, डिवोट, अर्न्स, अर्नेस्ट, beseeching and ceaseless talk. ठीक है, स्टमोनियम पेशेंट आपको ज्यादातर अगर आपको पहचानना है तो क्या होगा ना, वो अपने आप से ज्यादा बात करता है, बम्बलिंग टाइप दिखेंगे आपको, ऐसे ऐसे माला जपते रहेंगे और कुछ ना कुछ बात करेंगे. ठीक है, या एक प्रेइंग का जो एक है ना, तो धीरे धीरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस टाइप की बातें हमेशा मतलब इस टाइप का आपको पेशेंट ज्यादा दिखाई देगा, इस टाइप की लोकेसिटी ज्यादा आपको दिखाई देगी. ठीक है,
beseeching, caring, talking in rhymes also, loquacious, laughing, singing, praying, rhyming, sees ghosts, hear voices, talk with spirit. ठीक है? Rapid change from joy to sadness, violent, lewd, delusions about his identity, thinks himself tall, double or partner. That is very important for Alzheimer's. खुद की आइडेंटिटी को लेके भी कंफ्यूजन है एंड ही थिंक्स कि आई एम डबल, आई एम टॉल। तो हमने डिस्मोर्फिया, जो डिल्यूजन ऑफ डिस्मोर्फिया जो हमने देखा था, डिस्मोर्फोफोबिया, वो भी इसके अंदर मिल रहा है। ठीक है, एंड अ पार्ट इज ऑल्सो मिसिंग। देन कम्स द रिलीजियस मेनिया, जो हम हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं फर्स्ट ईयर से। कैनॉट बियर सॉलिट्यूड और डार्कनेस, मस्ट हैव लाइट एंड कंपनी। नाउ दिस इज अ very important difference between belladonna and your stramonium. In stramonium, they have desire for light and company, but in belladonna, they have aggravation from light. ठीक है, and there is more like fear and everything from your dark animal या black dog या bull. Okay, and one more thing, the hydrophobia is very prominent in stramonium. Sight of water glittering brings on spasm, delirium with desire to escape. Okay, I'm not reading all the things, but I wanted to say, if you want to prescribe stramonium, there should be religious mania. Which type of religious thing? There should be rhyming, praying, beseeching, always talking to God. ठीक है, in a rhythmic manner, always seeing, talking like this, ऐसे कर रहे हैं या आमने सामने बात कर रहे हैं, अच्छा तुमने ऐसा किया, अच्छा मैंने ऐसा किया, इस टाइप की बातें करते हैं। जो आपको पता है, कभी कभी आप कभी रोड से पास ऑन करते हैं और आपको फुटपाथ पे भी ऐसे लोग दिखते हैं ना, जो आपस में बात कर रहे होते हैं, स्ट्रेंज जेस्चर्स जो बना रहे होते हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस टर्मोनियम जैसे। ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या दिखेगा, द की पॉइंट इज फॉर स्टर्मोनियम इज डिजायर फॉर लाइट एंड डिजायर फॉर कंपनी। स्टर्मोनियम पेशेंट हमेशा जब भी आपसे आके बात करेगा तो बहुत पास आके बात करता है, बहुत कंसोलेशन आपसे चाहता है। जैसे ही आप उससे बात करेंगे, थोड़ा समझाएंगे तो मान भी जाता है। ठीक है, एंड अदर थिंग ऑल्सो, इन एनी कंप्लेंट स्ट्रामोनियम विल हैव पेनलेसनेस, which is a key point in Allen's keynote. In all complaints, the stramonium will have painlessness. Okay. Next comes your hyoscyamus, which is has your lascivious mania, which we all know. Very suspicious, again, talkative, obscene, lascivious mania, uncovers body, jealous, great hilarity, inclined to laugh at everything, delirium with attempt to run away, low muttering, constant corpophagia, deep stupor. Now, the main thing which I want to emphasize here is this. In delirium, hyoscyamus occupies a place midway between the belladonna and stramonium. See, if you are confused between belladonna and stramonium, what to give in that patient, you can think of hyoscyamus. And how can you differentiate? The constant cerebral congestion part is more important in belladonna, and the mania, the fierce rage and the maniacal delirium of the latter. The stramonium में आपको इस तरीके का maniacal delirium will be more prominent in your stramonium. ठीक है, तो hyoscyamus is in between plus the lascivious mania. ठीक है, desire to like open your clothes and talk in a very lascivious manner, obscene scene. ठीक है ना, lascivious mania, immodesty will not be covered, kick off the clothes, exposes the person, sings obscene song। ये आपने देखे होंगे कुछ रास्ते पे भी खड़े हुए कुछ लोग जो है ना, कभी कभार लड़की जा रही है तो कुछ गंदे इशारे करते हैं या फिर कुछ ऐसे गाने गाने लग जाते हैं। ठीक है ना, बट ये वाला दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर एक नॉर्मल पर्सन ये चीज कर रहा है तो वो हाइपोथैलेमस की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो हो सकता है कि फ्लोरिक एसिड की कैटेगरी में ज्यादा है। ठीक है, बट एक मेंटली इल पेशेंट अगर ये कर रहा है, या फिर आप मान लीजिए जो पेशेंट वाज एक्सपीरियंसिंग डिलीरियम, फॉर एग्जांपल इफ अ पेशेंट इज हैविंग हाई फीवर,
and I am behaving in a certain way. I am having the fever and I am behaving like suddenly I have started behaving in a very lascivious manner. In my fever, I am just opening all my clothes and talking very, um, what to say, very obscene thing. Started doing very like started doing masturbation or anything. ठीक है? But you have to remember these are happening in delirium. ठीक है? जो आपको छेड़छाड़ करने वाले जो लोग दिखते हैं, they might not be your higher sense type of patient. ठीक है? That you have to remember. या ऐसे नहीं देखना है कि हर कोई पेशेंट जो आपसे आके बात करता है, या अगर कोई लड़की है या कोई फीमेल पेशेंट आया है, थोड़ा उसका ब्लाउज यहाँ से नीचे है, तो आपने सोचा कि नहीं नहीं दिस इज योर लेसीवियसनेस ऑफ हाई सेवन. ओके, ऐसा नहीं. ओके, एंड नेक्स्ट कम द Veratrum album. Veratrum album is a very important remedy because it has all the symptom of belladonna, your stramonium, your hyoscyamus. Okay, it covers all the things which I have just read or taught you in all these three remedy. Means if you got the combination of all these three remedies, ठीक है, belladonna, stramonium and hyoscyamus in one patient or in one remedy, this is your Veratrum album. And the key to prescribe Veratrum album will be a kind of perspiration, cold perspiration on the forehead, or a state of collapse or prostration, you can say, just you see in your arsenic. ठीक है, so a combination of belladonna, hyoscyamus, stramonium plus the perspiration, cold perspiration, and the your your prostration. Okay, so these three things will give you the idea of preterm. One other thing also which I can add is the delusion of grandiosity. This thing, the delusion of grandiosity is also very prominent in Veratrum album. ठीक है, कि I am the king of the world, I am the richest man alive. भगवान भी मेरा कहा मानता है, या मैं ही भगवान हूँ. ठीक है, अगर ब्रेटम एल्बम को याद रखना है तो यू कैन रिमेम्बर दिस पिक्चर ऑफ नवाजुद्दीन सिद्दीकी. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ही है. एंड होता क्या है, देर इज लॉट ऑफ boasting also and lot of show off also in the terms of jewelries, in the terms of cash, in the terms of your cars and everything. ठीक है, for example, a Veratrum album patient is coming to your OPD will be full of this jewelry and everything. आपके सामने बैठने से पहले वो अपने जो मर्सिडीज की चीज है वो आपके सामने रख देगा. ठीक है, जस्ट टू शो कि हाँ मेरे पास कितना है, उसका जरूरत नहीं था, बट एक सामने वाले को ऐसा दिखाने के लिए. और जब भी बात करेगा तो एक ऐसी टोन में बात करेगा कि वो सबको जानता है, कि बहुत सारे उसके कनेक्शन है मंत्रियों से, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, रिसोर्सफुल पर्सन है. ओके, तो कहीं ना कहीं उस चीज को वो दिखाने का कोशिश करेगा. ठीक है, और भी एक और एग्जांपल लेना हो तो आप ले सकते हैं स्पॉइल्ड ब्रैट. स्पॉइल्ड ब्रैट का मतलब क्या होता है, एक अमीर जादे की एक बिगड़ी औलाद. अगर ऐसा समझा जाए तो ब्रेटरम एल्बम कहीं ना कहीं वो एक बिगड़ी औलाद टाइप का पेशेंट ज्यादा आपको देखने को मिलता है. आई होप इतना समझ में आ रहा होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कम योर एक्टिया रेसोमोसा, which is very important remedy for especially the symptoms of delirium or hallucination post delivery. Okay, most of the most where the homeopathy works wonder is in the cases of females, and especially the purpureal mania works very wonderfully. The purpureal mania thinks she is going crazy, tries to injure herself, Melia, following disappearance of neuralgia,
sensation as if a very heavy black cloud had settled all over her, enveloped her head, so that all is darkness and confusion, and illusion of mouse running under her chair. Okay. So two, three things we are seeing here. The patient is having mania, patient is having illusion of mouse running under her chair. Illusion में हमने क्या बात किया था कि there is no real uh, sorry, there is a real object but the perception is disturbed, है ना? मे बी हो सकता है कि कोई पत्ता या कोई हवा से कोई चीज नीचे गया, बट ही इज हैविंग द इल्यूजन दैट द माउस आर रनिंग अंडर हर चेयर. ठीक है. And just after delivery, the puerperal mania, if looking into the practice of medicine aspect, up to the 4 weeks after the delivery, if the patient is experienced the symptom of depression or the mania, we can easily prescribe ecterosome because it covers the whole pathology. Okay. Next comes your cannabis indica. कैनबिस इंडिका के लिए मैं एक या दो चीजें बोलना चाहूंगा, बाकी सारी चीजें जो हमने पढ़ा है ऑलमोस्ट सब चीजें इसमें मिलेगा. द ओनली डिफरेंस विल बी फॉरगेटफुलनेस विल बी देयर, एंड the disorientation about the time and the distance is the main key highlight feature of this cannabis indica. As you can see here, uh, in the fifth line, delirium tremens, excessive loquacity, exaggeration of time and distance. Time seems too long, a few seconds seems ages, distance seems immense, a few roads seems miles. ठीक है. होता क्या है कि मान लीजिए कि आप एक बाइक चला रहे हो और अब बाइक के बीच में एक गड्ढा आया. ठीक है. तो ऐसे पेशेंट को, कैनबिस इंडिका पेशेंट को ऐसा नहीं लगता कि वो गड्ढा है, ऐसा लगता है कि वो पूरा एक हाई है. ठीक है ना. और टाइम विल पास वेरी 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 स्लोली. ठीक है. तो this type of disturbance of time and disorientation will be your cannabis indica. Other symptom will also be there, the whatever we have discussed. Okay. Next comes your platina. है ना. अगर ग्रैंडियोसिटी का बात आया है तो कहीं ना कहीं प्लेटिना का बात भी आना चाहिए था. तो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दिस. बट इसमें जो कंफ्यूजन जो होता है वो दूर हो जाए इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है, क्योंकि वो सिर्फ ग्रैंडियोसिटी नहीं है और भी चीज है. मैं बताता हूँ क्या है. से द थर्ड लाइन लास्ट, mentally delusions as if everything about her were small. All person physically and mentally inferior, but she is physically large and superior. Now this we have discussed in delusion of dysmorphophobia. तो है ही इसके अंदर. एक और delusion भी होता है, delusion of enormity. तो Platina has showing two delusions here. One is delusion of dysmorphophobia, means I am sorry, I am big and the other person is small in front of me, and enormity means the superiority complex. Okay. See, mentally delusion as if everything about her were small. Okay, this is dysmorphophobia. And all person physically and mentally inferior, but she is physically large and superior. This is your delusion of enormity. Enormity. Okay. Then sensation of growing larger in every direction. Again, the delusion of enormity. ठीक है. So delusion of grandiosity तो आपको पता चल गया, लेकिन प्लेटिनम में जो दो चीजें एक्स्ट्रा थी वो मैंने आपको समझा दी यहाँ पे. बाकी जो मेटेरिया मेडिका की सिम्टम है दैट यू ऑलरेडी नो. So I think we are at the end of our today's session, and अभी आई थिंक आप ऑडियंस में से आप पूछो अगर आपको कोई डाउट है तो, regarding this materia, regarding management, or regarding something which you haven't understand in this webinar.
I'll be happy to answer. Mansi, are you there? Yes, sir. So, हाँ, any inputs from the audience? Because the session was very informative. Any doubts from the attendees? They can ask. ऑल क्लियर हुआ है या ऑल क्लियर हो गया है? Let's see, sir. So, sir, apart from the question and answer session, can we हम्म, discuss a few of questions? हाँ, यस प्लीज। एंड So, sir, अगर अभी yes, sir. आपको एक सेकंड, अगर Mm-hmm. अभी आपको कोई चीज ना समझ आई हो या आप बाद में पूछना चाहें, तो यू कैन Hmm. कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस। दिस इज माई email ID, my Instagram handle and my phone number. So feel free to give me any kind of feedback or any suggestion or any doubt if you have regarding this session. So I'll be happy to answer. Absolutely, sir. So, sir, as we see, psychiatric cases are often complex and long term. Sir, Hmm. how do you approach remedy selection and follow up in such cases? Okay. First thing I want to say, there are two things you have to manage here. Okay. First thing is Hmm. the diagnosis part, because without diagnosis, you cannot proceed. You can Right. give medicine, that is true. Okay, but you will not be able to manage the patient, because not the prescription part is not the only thing we have to focus in. Okay, management is equally important, especially in the mentally sick patient. For that, you have to follow the Hahnemann's guide, and you have to know little bit knowledge about the guidelines of your DSM guidelines. So there are two guidelines which we follow. There is ICD, International Classification of Disease. So right now it is 11th version, and there is DSM classification. ठीक है? DSM classification is specific for the your mental diseases. ICD is for all the diseases, and DSM is for only for the mental diseases. ठीक है? तो DSM 5 has given the diagnostic criteria also and the management also. ठीक है? तो first thing is that we have to follow this. Second thing is the homeopathic part. In the homeopathic part, you have to choose the medicines very carefully in this, and you have to be very patient. Don't think कि एक मेडिसिन से Yes. क्योर होगा। ठीक है? आपको हो सकता है, जैसा हैनीमैन ने बोला ना, कि अगर लेटेंट सोरा अगर फ्लेयर अप हो रहा है, तो आपको बीच में एक्यूट मेडिसिन देना पड़ेगा। एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, डेफिनेटली, फॉर अस ऑल्सो, फॉर एलोपैथ्स ऑल्सो। Okay, so we have to be very patient, and we have to stick to our laws. We don't have to feel inferior. In the 210 to 230, you will see in the 230, I think, Hahnemann has like boasting that he is saying कि we are the superior ones by in the treating the cases of mental disease. Okay, let me just read it. See, says in the for example number 230, indeed, I can confidently assert from great experience that the vast superiority of the homeopathic system over all other conceivable methods of treatment is nowhere displayed in a more triumphant light than the mental disease and emotional disease of long standing, which originally sprang from corporeal maladies or were developed simultaneously with them. ठीक है? तो see,
Dr. Hahnemann 200 years ago, when this classification was not even present, and he was that much confident about that our vast superiority of treating the patient was in homeopathy, by homeopathy. So we can also treat this patient, but just we have to be aware about certain things. We just इस चीज का याद रखना है कि जब हम प्रिस्क्रिप्शन पर लिख रहे हैं तो इल्यूजन को डिल्यूजन ना कर दें, ठीक है। हेलुसिनेशन को आप कुछ और ना बना दें। ओके, यू हैव टू डायग्नोज द पेशेंट करेक्टली। और अगर अच्छे से मान लो करेक्ट डायग्नोसिस नहीं भी है तो आप जो करेक्ट वर्ड है उनका यूज करें, ठीक है। और जो गाइडलाइंस भी है कि पेशेंट का रूड नहीं होना है, पेशेंट के रिलेटिव को आपको ज्यादा बताना है, ना कि पेशेंट को आपको बोलना है कि हाँ भाई आपको सिजोफ्रेनिया है, ठीक है। Hmm. पेशेंट की फैमिली को एडवाइस करना है कि आपको कैसे डील करना है पेशेंट से, ठीक है। कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट उसके पास नहीं होना चाहिए, ना वो खुद को हार्म करे ना आपको हार्म करे, ठीक है। और इसके लिए और भी चीजें होती हैं, मैं वो एक्चुअली बहुत लंबा खिंच जाता है इसलिए मैंने थोड़ा सा हाँ जी अवॉइड सर। किया। these are there are psychotherapies also which we can learn also, ठीक है। We don't need to be a psychiatrist in MB, MB psychiatrist to learn the, we can have little bit information about the psychotherapies. So there are cognitive therapies, family therapies, ठीक है ना। इफ दे कपल आर देयर तो हस्बैंड वाइफ का दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो उनसे हम फैमिली Hmm. को पहले तो अवेयर कराते हैं कि आपका जो पेशेंट है, बच्चा है, वो कुछ ऐसा उसको ताबू नहीं बनाना है, उसको मेंटली टॉर्चर नहीं करना है, आपको घर में ऐसा नहीं बोलना। अगर आप ही उसको पागल 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 बोलते रहेंगे तो इट विल हैव अ डिटोरिएटिंग इफेक्ट ऑन द पेशेंट, ठीक है। True आपको sir. उसको जैसा नॉर्मल लोग होते हैं वैसा ही उसको रखना है, बस कुछ चीजों को अवॉइड करना है, ठीक है। रूड नहीं होना, हार्श नहीं Okay होना, sir. मारना पीटना नहीं है, ठीक है। और आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन से डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यस, आपको जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। All right sir. अदरवाइज मेडिको लीगल एस्पेक्ट भी होते हैं ना, बट जी दीज आर सर। द केसेस वेयर यू शाइन। जहाँ पे एलोपैथ्स भी आपके सामने सर झुकाते हैं, वो भी आपकी मानते हैं कि आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो माई आई थिंक टेक अवे मैसेज इज दैट कि बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन होम्योपैथी। All right sir. Thank you so much. So one question from my side, like sometimes patients have this query in the clinics, like their one known patient is recommended for rehabilitation, हम्म, like in which we consider it's the last stage of treatment, like we study in the PSM. So, sir, should we consider in treatment, in treating the patients which are recommended for rehabilitation? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। Okay. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। होम्योपैथी डजंट हैव दिस काइंड ऑफ थिंग कि मतलब इस स्टेज पे देना है कि इस पे नहीं देना है, ऐसा कुछ Hmm. नहीं। द बेसिक थिंग इज दैट इफ यू हैव द peculiar symptom, Hmm. okay, if you have the PQRS symptom, if you have the prescribing symptom, you can prescribe, okay। Okay. डिजीज कोई भी हो सकता है, बट Hmm. यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट, Hmm. जी ओके। sir. ऐसा नहीं, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए कि मतलब अरे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे दूंगा और सब हाँ. कुछ ठीक हो जाएगा। दैट इज नॉट द वे, ओके। Exactly. द Because वे sir, इज दैट, it's हाँ. So, like, as I want to say, like, when we hear that patient is in rehabilitation, so there must be the therapies also, like which are necessary to provide to the patient. एग्जैक्टली। So we नो should नो, not एग्जैक्टली stop एग्जैक्टली। that, stop नो नो that नो those नो नो therapies, नो, na, right, sir? वी शुड ऑलवेज टेपर, Hmm. ठीक है। वी शुड ऑलवेज टेपर द, एक्चुअली आई हैव नॉट कवर्ड द एंटीसाइकोटिक पार्ट कि क्या Hmm. क्या मेडिसिन देते हैं, कैसे करें, तो सेमिनार Hmm. विल बहुत लंबा खिंच जाता। तो हाँ हाँ. अगर फ्यूचर में हो सकता है तो आई विल डिस्कस दैट। तो Sure. वी हैव टू टेपर द डोज, ठीक है, ग्रेजुअली। फर्स्ट बाय लिटिल लिटिल लिटिल, देन alternate days, one alternation, then Hmm. 2 days alternation, like this, and along with the therapies, ठीक है। हाँ. ऐसा नहीं बिल्कुल. कि आप सिर्फ अपना मेडिसिन देंगे और बिना थेरेपी के वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है।
Hmm. आवर वन एम शुड बी कि हम जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन चल रहे हैं उनको धीरे धीरे हम कम करवा सकते हैं, Hmm. क्योंकि कभी कभार वो मेडिसिन भी एडिक्शन का काम भी करती है, बिल्कुल। कॉस्टली भी होती एग्जैक्टली हैं, सर। और जरूरी नहीं बिल्कुल। है कि हर पेशेंट उसको फॉर्ड अफोर्ड भी करते हैं। करता है। हम्म। एंड पेशेंट के लिए जितना ये प्रॉब्लम बुरा है, उससे ज्यादा उनकी फैमिलीज के लिए, उनके जी को सर। वर्कर्स के लिए है ना। बिल्कुल। अगर किसी भी एक फैमिली के अंदर ऐसा होगा तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्या हाल है। हाँ। तो इसलिए एग्जैक्टली। आपको ऑलवेज बी वेरी empathetic towards patient हम्म। and family members also, and you also always try your best to just reduce their suffering, ठीक है, with very हम्म। gentle pills which we have, the homeopathy, ठीक है ना, gentle medicines है, gentle हम्म। तरीके से ठीक करना। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। I think it's time to wrap up now. We have gained so much knowledge from you in the cases of psychiatry and application of Materia Medica. It was a very informative session, sir. Thank you so much for giving us your valuable time. Thank you, Mansi, for inviting me, and I also enjoyed this session. एंड आई थिंक थोड़ा सा भी अगर मैं इसमें हेल्प कर पाया हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। Sir, और definitely. और मैं चाहूंगा कि कंटेस्टेंट और जो भी हेल्प करना चाहें, जो भी मुझे बताना चाहें, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। Sir, sure. And this session will be soon uploaded on the YouTube channel of Homeopathy 360, where you can rewatch this session and have your suggestions and compliments or the comments हाँ, in the श्योर श्योर comment श्योर। section. यस, आई माइट हैव मेड सम मिस्टेक्स आल्सो, तो प्लीज फील फ्री टू करेक्ट मी, ओके। I have just shared my experience here, and I would like to hear your experience. Thank you so much, sir. Yes, thank you, thank you, thank you, everyone. Good night. Good night, sir.